you. Good afternoon. So how are you all doing? Doing great? Show me 2 jiggling thumbs if you're doing great. Come on. No jiggling thumbs, huh? No one is doing great. My God. You know what are jiggling thumbs? Okay, the thumbs which are dancing. That's jiggling. Okay, okay. Rudisha, can see thumb. Yash, this thumb is not dancing. Okay, that's nice. We all are doing great. Take care. Weather is changing. So now I want 4 people will play. What's that? Okay, so what we'll do is we will begin session with a game. Okay, for that purpose, I want 4 people. What is this yes, no going on in the chat? I'm sorry, I did not give any such instruction. Okay, so can I have 4 people right now? We'll be playing a game. So I want 4 people as a team. So 2 teams we'll make out of them. So the ones who type their name in the chat, first 4 people will get the chance. So please type your name. No short forms, complete name. And no yes, write your name. Okay, Pragya, Sanskriti. 2 more. Satakshi and Ishan. Okay, that's that. So we have 4 people. I'll just tell out the names. We have Pragya, Sanskriti, and then we have Satakshi and Ishan. Okay. All right. So game क्या है? अब वो समझते हैं. What we'll do is we'll have 2 teams. एक team में 1 person है और एक team में 3 people है. ठीक है? और हम क्या करेंगे? I will ask a question based on all the people whose cameras are on. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्लू मैंने किस बच्चे का दिया है और आपको उसका नेम चैट बॉक्स में टाइप करना है. सो टीम ए वी हैव प्रज्ञा. You are in team A. Okay. Pragya, you're there, right? Yeah. So you are in team A. And Sanskriti, Satakshi, and Ishan. You 3 are in team B. Okay. Right? So team A is Pragya and team B is Sanskriti, Satakshi, and Ishan. और आपने जो है आपने उस बच्चे को आइडेंटिफाई करके उसका नेम चैट में लिखना है. सो टीम ए एंड टीम बी यू हैव टू राइट इट. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट क्लू इज there's a child in the class who's wearing a green sweater and is halfway standing right now. So who is it? Come on, look at the picture and identify quickly. A child wearing a dark green sweater and is halfway standing. So who is it? Come on, Pragya, team A. Sanskriti, Satakshi, Ishan, hurry up. Type your answer. Okay. Pragya says Devish. Right. So Pragya scores 1 here. Yes, it's Devish who is halfway standing and is wearing green sweater. Okay. Naksh is not wearing green, Ishan, he's wearing blue. Okay, so Satakshi also answered later. So Pragya answered it fast. Okay, now let's go on to the next one. There's a child in the class who is wearing a striped sweater which has dark blue, light blue, and gray stripe. Gray is not very much visible, however, dark blue and light blue is visible. So a child who's wearing a
sweater which has stripes. The color of the stripes is dark blue and a light blue. Okay, so Pragya again. Pragya said it's Bilal. Yes, Pragya, it's Bilal. Team B, where are we? We are going very slow, huh? Okay, now the third one. So third is, there's a child in the class who's wearing a cap and the cap has a bow. So there's a child in the class who is having a black cap and the cap has a bow. Bow or a butterfly, whatever you want to say. So quickly, team A, team B, identify. No, it's not Naksh. Janvi, yes. So Devish says. Okay, Pragya answered later this time, and Satakshi also. There were others in the class who answered first, right? Okay. So now people, over here, if we see, 2 times Pragya was the first one to answer. However, in the third one, her answer came after the other class members. Okay. So, what do you think we were doing in this game today? हमने ये गेम क्यों खेला जिसमें एक टीम मेंबर है और एक में 3 टीम मेंबर्स थे और हम क्या करना चाहते थे? What was the purpose of playing this game? Can anyone guess? Anvesha, you want to guess? Unmute, beta. No, ma'am. I am my side of network issue. So, ma'am, my class is joining late. Ma'am, ma'am, आप क्या करा रहे हैं? Nothing. We were playing a game, and now I am asking the purpose of the game from all. Okay, so what do you think was the purpose of the game? हम ये game क्यों खेल रहे थे, देविश? क्या? हम ये game क्यों खेल रहे थे? मैम, आपकी आवाज कट के आ रही है. I am asking हम ये game क्यों खेल रहे थे? Satakshi, it's great you're complimenting Pragya. However, this intervention is not needed. She knows you have only sent the message, not me, because I've already congratulated her on the screen. Please pay attention to the class. I've asked a question. Okay, Yug doesn't know. If you see, we had 2 teams, है ना, जिसमें एक member था और एक team थी जिसमें 3 members थे. तो अगर मैं देखूं हम क्या सीखना चाह रहे थे, हम सीखना चाह रहे थे टीम वर्क. ओके, तो अगर मैं देखूं टीम वर्क, तो टीम वर्क का क्या मतलब है और टीम वर्क क्यों इम्पोर्टेंट है? द पर्पस ऑफ द गेम वाज टू टीच यू व्हाट इज टीम वर्क. सो व्हाट डू यू थिंक इज टीम वर्क? प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर. आपको पता है टीम वर्क क्या होता है? ओके, हर्षित. मैम, टीम वर्क मतलब मैम जब हम जैसे मैम टीम बी में बहुत सारे 3 मेंबर्स थे, तो मैम हम तीनों ने वर्क नहीं किया, तो मैम टीम वर्क वो होता है जो एक साथ मिलकर वर्क होता है. राइट, जो हम एक साथ मिलकर वर्क करते हैं और इस सिचुएशन में हमें दिख रहा था दे वर नॉट वर्किंग टुगेदर एज अ टीम. राइट, सो टीम वर्क होता है व्हेन वी वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप. तो कोई भी टास्क जब आप ग्रुप में करते हो, ओके, लाइक 2 people or more than 2 people, then that's called as teamwork. So अगर मुझे टीम वर्क को अकम्प्लिश करना है, अगर मुझे उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम टीम वर्क? कैसे करना चाहिए हमें टीम वर्क? कैन एनीवन गेस कि अगर मुझे कोई भी टास्क ग्रुप में करना है तो मुझे उसे अच्छे से करना है कंप्लीट, तो कैसे कर सकती हूँ मैं? क्या क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं या किन बातों का मुझे ध्यान रखना है? यश. मैम, हमको किसी को चीट नहीं करना. Right, we should not be cheating in the group. We should be honest. Very true. What else?
हर्षित? मैम हमें फाइटिंग नहीं करनी। Okay, we should not be fighting. Very true. Lucky? मैम हमें एक साथ मिलकर काम करना है। Okay, हमें एक साथ मिलकर काम करना है। Very true. मनस्वी? मैम टीम वर्क में हमें बिल्कुल हम सब में बॉन्ड होना चाहिए। Right. हम सब में बॉन्ड होना चाहिए। रुद्रा? यस मैम हमें किसी से मैम लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मैम झगड़ा भी नहीं करना चाहिए कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं अच्छा नहीं, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तो मैम हमें उनका साथ भी देना चाहिए, उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। Right. Yes, हमें उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, फाइट नहीं करना चाहिए। And Pragya says we should be supporting our team. Definitely, yes, you should support your team. Satakshi says we should help our team. Yes. Okay, now the next question for you to think is कि हमें क्यों टीम में काम करना चाहिए, या why is it important for us to work as in a team? क्यों important होता है टीम में वर्क करना, या टीम वर्क हमें कैसे हेल्प कर सकता है? अन्वेषा? मैम वी गेट स्ट्रेंथ फ्रॉम टीम। Yes, we can draw our strength from team कि अगर हम कहीं stuck हैं, कोई प्रॉब्लम लग रहा है हमें, तो हम उनसे definitely help ले सकते हैं। Yes, अन्वेषा? Okay, next Hamza. यस मैम। मैम हमें अपनी टीम की हेल्प करनी चाहिए और मैम हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। Okay, the question is now, why is it important for us to work in a team? हमारे लिए टीम में वर्क करना क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए You're his Huzaira, right? You signed in from your sister's account, yeah. Okay. Think Huzaira about this question now. आपने पहले वाले क्वेश्चन के लिए ठीक आंसर दिया है, अब सेकंड के लिए सोचो। आरव? यस मैम। Yeah, please answer. मैम कि मैम अगर हम टीम में रहते हैं तो अगर हम कहीं फंसे हो या तो वो हमारी हेल्प कर सकता है। Right, so if we are stuck, a team can help us. Very true. Yeah, if we have any doubt or problem. Or Shivansh? Satakshi after Shivansh. Yes, Shivansh? Shivansh, are you speaking? Muted yourself. Okay, Satakshi? Yeah. मैम जब हम टीम में रहते हैं तो मैम हमें किसी से डर नहीं लगता और मैम हमें कोई कुछ कह भी नहीं सकता। Definitely yes. जब हम टीम में होते हैं तो हमें डर भी नहीं लगता और कोई हमें कुछ कहता भी नहीं है. So true. Okay. Then we have Mohammed Ansari. Please unmute. मैम टीम में रहने का ये भी फायदा है मैम, अगर हम अकेले होंगे तो मैम कोई सी भी गेम होगी, लोगों के अगर पास टीम है तो मैम कोई भी हमें हरा के चले जाएगा, लेकिन पर अगर मैम हमारे साथ में कोई है तो मैम वो हमें जब तक नहीं हरा सकते तब तक पूरी टीम आउट नहीं हो सकती। Definitely. जब तक कि पूरी टीम आउट ना हो जाए तो हमारे पास चांस प्ले करने का डेफिनेटली ज्यादा होता है ना? और ओके, आयुषी? आयुषी अनम्यूट बेटा। मैम पता है कि मैम वी आर नॉट अ टीम बिकॉज वी प्ले टुगेदर, वी आर अ टीम बिकॉज वी रेस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड केयर फॉर वन अनदर। Yes, we form a team when we respect and care for one another. Definitely yes. और साथ में टीम वर्क का एक फायदा और पता है क्या होता है? अब देखो सारा काम अगर आप करोगे, है ना, तो वो कितना सारा लगेगा ना?
अगर पूरा प्रोजेक्ट आपने बनाना है लेट्स से, तो आपको वो वर्क ज्यादा लगेगा। बट अगर वो वर्क हम टीम में कर रहे हैं, तो हर कोई थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है प्रोजेक्ट के लिए, तो हमारे पास काम भी कम हो जाता है। यानी अगर हम वर्क को ढंग से डिवाइड करें तो हमारे पे बर्डन भी कम होता है। यस और नो? राइट। सो टीम में काम करने से हम अपनी एफिशिएंसी और बढ़ा सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास कम काम है तो हम उसको ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा आउटकम होगा, यानी कि जब सब मिलाकर वो प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, तो वो कितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है। जबकि 1 पर्सन करे तो उसके आगे तो वो कम है ना, और हो सकता है डिफरेंट आइडियाज ना आए। अगर हम टीम में होते हैं तो सब अलग सोचते हैं, तो सोचो कितने सारे आइडियाज आ जाएंगे, और क्या पता कौन सा आइडिया ज्यादा बेस्ट है। अब 1 पर्सन सोच रहा है तो वो एक लिमिट से सोच रहा है, but more than one people think differently, so you can have many ideas to work on, right? और साथ में टाइम मैनेजमेंट भी होता है, क्योंकि अगर आपको पता है आपने कम काम करना है और आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, बट अगर पूरा सारा काम खुद करना है तो डिफिकल्ट है ना टाइम मैनेज करना भी। सो टीम वर्क हमें एफिशिएंट बनाता है, टीम हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाता है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सिखाता है। जब हम टीम में काम करते हैं तो मुझे पता है मैं अलग सोचती हूँ, मुझे पता है आप अलग सोचते हो, तो हम एक्सेप्टेंस लाते हैं, हम एक दूसरे के आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस इज टू थिंक कि ठीक है, टीम वर्क डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें बहुत सारी क्वालिटीज भी सिखाता है और बहुत चीजें सिखाता है, हमें एक अच्छा पर्सन भी बनाता है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मुझे टीम में वर्क करना है तो मुझ में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सोचो क्या क्वालिटीज आप में होनी चाहिए एज अ पर्सन टू वर्क इन अ टीम। थिंक, कैन यू थिंक ऑफ द क्वालिटीज यू नीड टू हैव? ओके, सताक्षी, मनस्वी आफ्टर सताक्षी। मैम हमारे अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, और कि हम किसी की हेल्प करें, एंड हमारे अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए दूसरों के लिए। राइट, वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स, वी शुड बी काइंड। राइट योग, देयर शुड बी काइंडनेस इन अस। मनस्वी। Ma'am, we should kind, polite, and helpful people. Right, we should be helpful and guiding for the people. Yes, of course. Ayansh, sorry, it's a Yash, not Ayash. Okay, a Yash, yeah. 4C, please unmute yourself. Yash. Yes, ma'am. Yes, Yash. क्या क्वालिटीज आपको लगता है हमें होनी चाहिए to work in a team? Please share. Yash, please unmute and answer. Right, Satakshi, we should be kind, polite, helpful, and respectful. Rudra, please unmute. Yes, Manasvi, we should Yes, not ma'am. be jealous of anyone. What qualities should we have to work in a team? Ma'am, kindness, helpful or good. All right. So good is not a quality. Think beyond good, please. So yes, kindness and polite is what you have said. Helpful, yes. Not jealous. And Huzaira? Ma'am, we should helpful, respectful, and kind and polite people. Right. And apart from it, हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, सामने वाले की आइडियाज को भी हमने सुनना है, हमने किसी को नीचा नहीं दिखाना। सो नो ईगो, नो एटीट्यूड। राइट। आप, हो सकता है आप अलग तरीके से सोच रहे हो, कोई और किसी अलग तरीके से सोच रहा हो सकता है उसका आइडिया आपको बहुत सिंपल लग रहा हो, बट कभी कभी सिंपल आइडिया ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, है ना। तो हमारे अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे के आइडियाज के लिए रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, और हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। ओके, नाउ इन नेचर, कैन यू टेल मी वेयर यू हैव सीन टीम? नेचर में आपने कहाँ टीम देखा है? स्पोर्ट्स में तो हमें पता है
कि हम सब टीम में वर्क करते हैं, है ना, प्रोजेक्ट में भी करते हैं, बट नेचर में, एनिमल्स में किसी या कहीं अगर आपने ऑब्जर्व करा हो टीम वर्क एंड यू वुड लाइक टू शेयर, राइट? So Takshi, we should be forgiving as well. Okay, Harshit? मैम एनिमल्स भी टीम में रहते हैं, जैसे मैम लायन, टाइगर एंड Yes. मैम एलिफेंट्स, जिराफ्स, Very Yes. true. मैम ये भी टीम में रहते हैं। Definitely रहते मैम हैं. Okay, Yug? एंड मैम एलिफेंट हमेशा टीम वर्क करते हैं। Definitely yes, elephants भी team work करते हैं. And somebody wrote answer that in factory also we observe it. Pragya wrote in factory also. Yes, Pragya, we see it. Now I'll share a story with you of a bee. Okay, so let's see how we see teamwork coming in bees. Right, Indian Army as well. Yes, I totally agree. Okay, the screen is visible to all of you. Show me thumbs up if you can see the screen. Okay, and Vesha gives thumbs up. I wish you all right. Thank you. 30 million years ago, and they outlived dinos. What helped them survive for so long is an incredibly complex structure of their society and teamwork. Each bee has its own role and responsibility. Some of them build and repair their home, some bees protect it, others clean the hive and get food. But what if you could sneak into a hive and figure out how this whole system works? What would you see inside? For some mysterious reason, it's easy for you to get past the guards. But if you were a bee from another colony, they wouldn't let you in without a fight. The guard bees look rather intimidating. They stand on their back four legs at the hive's entrance, their front legs raised in the air. These bees inspect every insect entering the hive with their antennae and front legs. Each hive has its own odor, and the guards can understand if a bee belongs to their colony by smelling it. Only the bees that live in the hive can get inside. Suddenly, you see something strange. One of the guard bees has detected an intruder. An alien bee must have mistakenly tried to enter the wrong hive. But it's carrying a load of nectar, and the guard lets it in. Apparently, they don't mind accepting free gifts of food, even from strangers. You feel too curious to linger there any longer. The hive has only one entrance. You notice that the walls around it look strange. You take a closer look and understand that it's coated with a thin layer of some substance. It's propolis, hardened plant resin produced by bees. It helps fight infections and cures different health problems. A bit further, you can see countless honeycombs. They're densely packed hexagonal cells made of beeswax. Bees use them to store food, pollen, and honey. That's where they keep eggs, larvae, and pupae. Honeycombs are fixed to the walls of the hive. They stretch from top to bottom and are even attached to the sides. But you spot narrow passageways along the comb edges. Bees use them to move around the hive. You might also be able to squeeze through one of these tunnels. After exploring the place, you figure out that bees store honey in the upper part of the comb. Beneath, there are cells that contain pollen. Then, there are cells used for keeping eggs with future worker bees. And at the very bottom, there are drone eggs. Of course, your ultimate goal is to see the queen bee, but it's not that easy to find her. First, you come across lots of other bees. Most of them are workers. They make up the largest part of the hive's population, and they're all ladies. Each of them has its own task. The most common of them is foraging. You spot a bee leaving a hive and decide to follow it. The queen can wait. Okay, so till now what you have seen is you saw the guard bees, right? Then you saw the worker bees. So worker bees, the first task for them was to go and look for the food. Okay? A bit. You want to see how bees provide food for the hive. The bee is buzzing ahead of you. After visiting a couple of flowers, it suddenly starts wiggling while hovering in one place. Ah, that's the famous bee dance. That's how bees communicate. Once a forager finds a perfect supply of nectar, it starts to perform a very precise dance. It consists of a series of straight lines and figure eights. So what this is telling कि जैसे एक बी को पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, so बहुत सारा नेक्टर है,
So what she does is to inform the other bees, it starts dancing. So what does this show? This shows कि अगर ग्रुप में आप वर्क कर रहे हो और कोई चीज आपको पता है, you should always give it to your group members, because the more you share, the more you learn. Okay? तो ये नहीं कि मुझे पता है तो मैं छुपा के रखूं कोई information या बात. No, it should be more of a sharing, so that more you share, the more you get to know about things. Okay? Throughout the dance, the bee is also shaking its wings. How long the dance lasts means how far away from the hive the nectar is. Every 75 milliseconds is another 330 feet to the distance, and how intense the dance is depends on the richness of the source of the nectar. The stronger the waggle is, the more nectar the bee has found. And there's also the angle of the dance. It shows the direction of the nectar in relation to the sun. Your bee must have found tons of nectar. It's practically vibrating. Suddenly, it starts flying back to the hive. You follow it. New. All right. So in this video, it was talking about the bee, and we saw the role of two bees. We saw the guard bees and we saw the worker bees. Worker bees food collect करती हैं, nectar collect करती हैं. Guard bees hive को protect करती हैं. And there is a leader, the leader bee, that's the queen bee. Okay? जो पूरे hive को manage करती हैं. And one more bee group is there that takes care of eggs and all the sick bees. So जैसे doctors and nurse होते हैं हमारे में, वैसे ही उनमें nurse bees होते हैं. Okay? So if you look at this video related to teamwork, what do you understand out of it? कि ये bees कैसे teamwork इतना effectively कर पा रहे हैं? Can anyone think of it? कि कैसे ये इतना effectively teamwork कर पा रहे हैं? युग? मैम मुझको ना आपको ये बताना था कि ना हनी बीज को ना बहुत मेहनत लगती है हनी बनाने के लिए. पहले एक हनी बी जाती है और फिर वहां से दूसरी हनी बी के पेट में देती है, और फिर वहां से वो दूसरी के में देती है, और फिर वो वहां से तीसरी की में देती है, और फिर एक हनी बी उसको वापस से पूरा क्लीनिफाई करके रखती है अपने उसमें. Right. So इससे हमने क्या सीखा कि बीज इतना अपना काम इतना इफेक्टिवली कैसे कर पा रही हैं? यस आयुषी? मैम कह रही थी कि मैम हनी मैम इतना सब कुछ करती है, तो फिर मैम उनका जो मैम हनी होता है. आयुषी, वी आर गोइंग अवे फ्रॉम क्वेश्चन अ बिट बेटा, और आपने अपने आप को म्यूट भी कर लिया है. द क्वेश्चन इज कि वो टीम में कैसे काम कर पा रहे हैं, कैसे? थिंक अबाउट दैट. सताक्षी? मैम क्योंकि हर हनी बी को दूसरी हनी बी का सपोर्ट है, और सारी हनी बीज को हर एक हनी बी का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए वो प्लीज थिंक कि सपोर्ट मिल रहा है. क्योंकि अगर मैं कहूँ गार्ड बीज वो सिर्फ गार्ड कर रही है, क्या वो खाना ढूंढने जा रही है? क्या गार्ड बीज खाना ढूंढने जा रही है? गिव मी अ थम्स अप फॉर यस एंड थम्स डाउन फॉर नो. जा रही है नहीं जा रही गार्ड बीज? गार्ड बीज जा रही है खाना ढूंढने, तो बेटा गार्ड कौन करेगा हाइव को? Were we all listening to the video? It doesn't seem so. हनी बीज अपना काम इतना इफेक्टिवली इसलिए कर रही हैं क्योंकि हर बी को पता है उसने क्या काम करना है. They have clarity. There is a proper division of work. कि जो गार्ड बीज हैं वो सिर्फ हाइव को गार्ड करेंगी, हाइव का ध्यान रखेंगे, जैसे हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं. ओके? सिमिलरली जो वर्कर बीज हैं वो खाना ढूंढ रही हैं. तो जैसे आपके घर में मम्मा कुक कर रही है, राइट? तो मम्मा का रोल है ना, वो डिवाइडेड है ना वो रोल. अगर किसी को नहीं पता कि कौन कुक कर रहा है तो खाना बनेगा आपके घर में? बताइए, नहीं बनेगा ना. तो ऐसे ही टीम वर्क होता है कि जिसका जो वर्क है उसे क्लियरली पता है और वो अपना काम अच्छे से कर रही है. ओके? और पूरा जो ग्रुप है उसको वर्क कराने के लिए there has to be one member in the group who leads the group. Okay? जो ग्रुप को लीड करता है, जैसे कि क्वीन बी है.
तो क्वीन भी डायरेक्शंस देती है, बताती है। जैसे कि आपके घर में अगर आप देखो, वी ऑल लिव टुगेदर, ओके, सो व्हेन वी आर लिविंग टुगेदर, हु इज फ्रेमिंग द रूल्स? आवर ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली के रूल्स बताते हैं, राइट? सो दे आर द वन हु इज होल्डिंग द फैमिली टुगेदर। कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई कुछ भी है, हम उनसे डिस्कस करते हैं, है ना? फिर ग्रैंड पेरेंट्स के बाद कौन आते हैं? हमारे पेरेंट्स आ गए, उनके, और आपके पेरेंट्स हो गए, या फिर आपके अगर लेट्स से चाचा चाची बुआ एंड ऑल relatives, you know, those people come in, then it's you. So that's how we are working in a team. तो टीम में सबसे पहला एक लीडर होता है जो इंस्ट्रक्शंस देता है, जो गाइड करता है, ठीक है? कि अगर टीम को कुछ समझ नहीं आ रहा है या टीम को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, डिफिकल्टी आ रहा है, तो लीडर हेल्प करता है, लीडर काम डिवाइड करता है कि कौन क्या करेगा। तो यानी कि अगर मुझे टीम में अच्छे से काम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपना काम पता होना चाहिए, क्लैरिटी पता होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, और उसके साथ साथ there has to be one person who will lead the team, because the leader is the one who is going to see कि काम ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा, सब अपना काम कर पा रहे हैं नहीं, सबको इक्वल काम मिला है या नहीं, किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, right? So in the team, for team to function properly, it needs one person who can lead it, and that's the leader. Okay, now थिंक अबाउट दिस कि जब हमें पता है, हमें क्लैरिटी होती है अपने टास्क की, हर चीज की, तब भी क्यों मुश्किल हो जाता है हमारे लिए टीम में वर्क करना? डिस्पाइट की डिवीजन ऑफ वर्क है, डिस्पाइट की सबको अपने रोल पता है कि एक लीडर है, हम सब ने क्या करना है, हमें अपने काम की क्लैरिटी है, स्टिल व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अस टू वर्क इन अ टीम? क्यों मुश्किल हो जाता है? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? या व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम वर्किंग इन अ टीम? रुद्र? Rudra, please unmute if you've raised your hand. Yes, ma'am. Yes, so why is it difficult for us to work in a team? डिफिकल्टी मैम क्यों होती है? हाँ जी। अगर मैम हमको पता है कि मैम हमको हमारा क्या है, अगर हम उस पे फोकस नहीं करेंगे तो मैम जो हम काम कर रहे हैं वो मैम नहीं हो पाएगा। अगर हम अच्छी तरह से फोकस भी करेंगे तो मैम वो काम हो जाएगा जो हमें दिया गया है, मतलब जो हमें पता है मैम हमें क्या करना है। तो यानी कि अगर हम ध्यान से काम नहीं कर रहे तो ऑफ कोर्स हमें अगर कोई कुछ कहेगा तो हम इरिटेट हो जाएंगे, राइट? सो व्हिच मींस समवेयर ऑफ आवर फोकस इज नॉट ऑन द वर्क, यस, एंड दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स इन द टीम बिकॉज हम अपना इनपुट अच्छे से नहीं दे रहे। युग? मैम पहले दिन तो जब हम पहली बार कहीं जाते हैं अपने मतलब वर्सेस करने किसी से अपने टीम के साथ, तो पहले मैच में तो डर लगता है, फिर बाद में धीरे धीरे आदत हो जाती है और फिर नहीं लगता है। राइट, सो मे बी हम कभी घबरा जाते हैं तो यस हम मैम। अपना अच्छे से नहीं दे पाते इनपुट, ओके, क्योंकि कोई चीज हमें मुश्किल लग रही है या हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यस एट टाइम्स हम घबरा जाते हैं। एंड और क्या रीजन हो सकता है? ओके, एट टाइम्स रीजन ये भी होता है कि हमें लगता है कि कोई बहुत ज्यादा बॉसी हो रहा है ना? कोई अगर लीडर है तो वो बहुत बॉसी है, तब भी हमें प्रॉब्लम होता है कि ये हमें ऐसे क्यों बोल रहा है या क्यों ऐसे बोल रही है, बट हम ये भूल जाते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा या वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, है ना? अपार्ट फ्रॉम इट और क्या रीजंस हो सकते हैं? जैसे कि आपने लिखा जेलसी नहीं होनी चाहिए, बट कभी कभी हम एक दूसरे से जेलस हो या ईगो आ जाए हमारे में, या हम फीडबैक ना लें कि कोई अगर हमें कहे कि नहीं ये काम आप और अच्छे से कर सकते हो और हम एक्सेप्ट ना करें और ईगो में आ जाए कि नहीं मेरा तो अच्छा है काम, है ना? So these are the reasons because of which it becomes difficult for us to work in a team. Now I want you all to think of situations from your life जब आपके लिए टीम में वर्क करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ हो, या आपने देखा हो कि कोई और टीम में है और उसकी वजह से डिफिकल्ट हुआ हो। And if you would like to share that situation, please raise your hand. It has happened with you या आपने ऑब्जर्व किया है किसी और के साथ, it can be anything.
Next, I want you to be attentive in the class, please, instead of typing unnecessary things and sending unnecessary emojis, which are not related to the topic. Yeah, anyone? सोचो कभी स्पोर्ट्स में आप स्कूल के लिए मैच खेलने गए या अपना पर्सनल कोई मैच खेल रहे हो या कभी सोसाइटी के साथ प्ले कर रहे हो या फिर घर में जैसे कोई वेडिंग है एंड you've contributed to do something about it. So you can share anyone. जब आपने टीम में काम किया या जब आप टीम में काम नहीं कर पाए, आप दोनों में से कोई भी शेयर कर सकते हो. Any situation if you have. Okay, I'll share one situation. A couple of days back, it just happened. We got vegetables from the market. So I was about to keep them in the refrigerator. And my son comes and says, Mama, I'll help you. Hum saath saath rakhte hain. And we kept it together and we could finish within 5 minutes. Now, why I share this with you, if I see we worked as a team together. And secondly, I did not have to tell him कि आप क्या करो. He volunteered. उसने खुद कहा मम्मा मैं हेल्प करता हूँ मैं साथ में रखवाता हूँ. ओके, तो टीम वर्क में हम ये सीखते हैं कि हम वेट नहीं करते कि कोई हमें ऑर्डर दे हमें क्या करना है, हम वॉलंटियर करते हैं. दैट ओके आई कैन डू दिस वर्क. ऑलराइट, सो you for working in a team you should not wait for somebody to tell you what you should do. You should ideally volunteer. Okay, anyone else has any situation to share for a teamwork? No situation. Strange. Okay, fine. So I just tell you the homework for today. Read page, it's not read, it's 2, I think. Do page 32, 33 and 34 of your Anvesha. I'll just listen to you, beta, give me a minute. Okay, so your homework is do page 32, 33 and 34 of your book. Yes, Anvesha. Ma'am, please repeat the question. The question is any situation from your life जब आप टीम में काम कर पाए थे या नहीं कर पाए थे. आप दोनों में से कोई भी सिचुएशन शेयर कर सकते हो या आपने किसी और को देखा जो टीम में अच्छे से काम कर रहा था या नहीं कर रहा था. अपने Yes, बारे में भी किसी और की भी एनी सिचुएशन. Yes, मैम मेरे पास एक सिचुएशन है. या प्लीज शेयर. मैम मैं अपनी बुआ जी के घर गई. मैम उधर मेरी भैया क्रिकेट की अपने फ्रेंड्स या सर के साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे थे बैकग्राउंड में. सो मैंने देखा मैम कि वो खेल रहे थे सबके साथ. बट मैम उनकी बॉल जब नाली में चली गई तो मैम उनमें से किसी ने नहीं बोला कि हम न्यू बॉल या वो बॉल को क्लीन करके उठाते हैं या मैम हम न्यू बॉल लाते हैं. तो मैम उन्होंने जब भी स्टॉप कर दिया खेलना. राइट, तो यानी अगर वो टीम वर्क में होते तो वो सोल्यूशन निकाल सकते थे. बट दे डिड नॉट. सो दिस शोज कि वो टीम में नहीं होकर भी नहीं थे. ओके, गुड एग्जांपल अन्वेषा. थैंक यू मैम. So yes, over here if you see, yes, the problem could have been sorted if one of them could have taken the lead. अगर उनमें से एक भी वॉलंटियर करके बोलता है that look let's try and solve the problem, चलो बॉल निकालें या नया बॉल लेके आते हैं, तो प्रॉब्लम आगे सॉल्व हो सकती थी. बट किसी ने वॉलंटियर ही नहीं किया सॉल्व करने के लिए. So yes, the task could not get accomplished. Okay, संस्कृति. मैम कौन सी बुक में काम करवाते हो? ड्यू ड्रॉप्स. मैम ड्यू ड्रॉप्स. मैम मुझे ना वो बुक एक्चुअली मैं ना कंफ्यूज हुई थी जब आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी ना, तो मैम अब मैं कंफ्यूज थी. मैम मैंने सॉरी यू म्यूटेड, प्लीज अनम्यूट. हाँ, आप कंफ्यूज हो गए थे. मैम आपकी जब फर्स्ट क्लास मैंने ली थी तो मैं कंफ्यूज हो गई थी. पीडी क्लास है बुक का क्या नाम है,
मैं उस रीजन से बहुत कंफ्यूज थी। फिर मैं ना कभी कभी क्लास नहीं ले पाती आपकी वाली कुछ, तो मैम वो मुक्का ना मुझे नाम बहुत डाउट है, तो मैंने कहा आज मैम से पूछ ही लेती हूँ। It's dewdrops. Okay. ओके मैम, क्या मैम आज आप होमवर्क सेशन में ड्यूड्रॉप्स का सारा वर्क भेज दोगे? सारा वर्क मतलब बेटा? मैम जितना भी अभी आपने ड्यूड्रॉप्स के करवाया है काम अभी तक। You will have to ask your friends because I am not the part of that group. Okay. You will have to ask your friends. ओके मैम। Yeah. Okay, then we wind up with the session. Have a wonderful day and think how you can work as a team. Okay. See you all. Have a wonderful day. Bye.